Hello and welcome to Rev Sports. I'm Gargi Raut, and joining me for this show is Debashish Sen, Shomik Chakravarti, and Naman Suri. What we're going to talk about today is Virat Kohli raising the Ranji Trophy excitement here in Delhi at the Arun Jaitley Stadium. Today he was there at the stadium for a practice session. Shomik, we have a gist of what really has happened at the practice session. Why don't you take it away? Give us some pointers before Rohit Juglan, who was on ground, will join us and give us all the details. Yeah, before giving you some pointers, Gagi, it's about the king is returning to the domestic fold when he has lost his crown. Um, the fact of the matter is, it is the way ABBA. I wrote in my copy. It is the way ABBA had belted it out in the 1970s. I mean, the thing is that Virat Kohli, see, the disaster down under has forced all the prima donnas, all the Indian team stars to return to the grind of domestic cricket. Rohit Sharma played the previous round of games for Bombay against Jammu and Kashmir. Now Virat Kohli, he skipped the previous round, citing a neck pain, and now he's back to the fold. Will be playing for Railways. As far as the practice today, it was his first practice session with the Delhi Ranji team, and he's returning to the domestic fold, to the Ranji Trophy fold for the first time since November 2012. Back then, he played against Uttar Pradesh in Ghaziabad. Now, as regards today's practice, what the details what we have, uh, he went there. He get into the group. He faced three spinners at the nets. Uh, Among them, Tyagi sort of couple of times beat him. He faced five fast bowlers at the nets. Navdeep Singh sort of troubled him a bit, but overall, it's a good practice session. It is for, for someone like Virat Kohli, you cannot interpret much about his netting form. It's about going out there and having some time, spending some time out there in the middle. See, this Ranji Trophy match, on the face of it, is not very consequential, but as the focus from Virat Kohli's point of view is the Champions Trophy. But always at any level, especially after 190 runs from 9 innings in Australia, at any level, under having runs under your belt, it gives you that kind of a confidence, and that can be carried forward. So from that point of view, it will also create a feel good factor. So I think Virat will love to spend some time out there in the middle and would like to play a long innings. Rohit, Rohit has also joined us. He's at the Arun Jaitley Stadium. रोहित सारे डिटेल्स दीजिए, काफी सारे डिटेल्स है आपके पास. कैसा रहा प्रैक्टिस सेशन? काफी हाइप बनी है विराट कोहली के रिटर्न की. 10 साल से ऊपर हो गए, ऑलमोस्ट 12-13 साल हो गए हमने लास्ट टाइम जब विराट को रणजी ट्रॉफी में देखा था. लेकिन बताइए कैसा रहा वहां का एटमॉस्फेयर? विराट कोहली ने क्या किया है प्रैक्टिस सेशन में? कैसे लग रहे थे? आई थिंक जैसा शामिद ने कहा एग्जैक्टली उसी तरीके से सारी चीजें चली है. वो 9:45 के करीब यहाँ पर आ गए थे. 10 बजे प्रैक्टिस शुरू होनी थी. उनकी एक ही वो गाड़ी, मतलब गाड़ियां उनके पास और भी होंगी, बट उनकी वो ब्लैक कलर की पोर्शे मुझे लास्ट टाइम पर भी याद है. 0018 नंबर है उसका, तो वो सीधे तौर पर दूर से दिख जाती है. तो वो जैसे आई तो एकदम से चहलकदमी बढ़ गई. अमूमन तौर पर क्या होता है, मीडिया अपने गेट से, जो 5 नंबर गेट है वहां से अंदर चली जाती है, लेकिन आज मीडिया जो है वो गेट नंबर 2 पर थी. वीरेंद्र सहवाग गेट पर थी, और वहां पर जब आपने देखा कि वहां से विराट आए, तो काफी गहमा गहमी रही. और उसके बाद जब सारी चीजें प्रैक्टिस की तरफ गई, और हम लोग जब ग्राउंड में आए, तो ग्राउंड में उन्होंने एक थोड़ा सा फुटी का सेशन, फुटबॉल खेला बाकायदा. पूरा एक 15 मिनट का जो है वो फुटबॉल मैच खेला गया, और 1-0 उसमें स्कोर रहा. जो जिस टीम में विराट थे वही टीम जीती. और इसके साथ साथ उन्होंने रनिंग की, स्प्रिंट्स मारे, और इसके साथ साथ छोटा सा एक फुटी का सेशन खेला. तो ओवरऑल अगर आप देखोगे, पहला आधा घंटा सारी ऐसी चीजों पे गुजरा जो थोड़ा सा वार्म अप ड्रिल्स होती हैं, थोड़ा सा फिटनेस को लेकर के, ये सारी चीजें जो है वो पहले आधे घंटे में आपको देखने को मिली. और उसके बाद वो जाते हैं नेट्स में. और नेट्स में जैसा शामिदा ने आपको बताया, पहले 15 मिनट उन्होंने सिर्फ नॉकिंग करी, और नॉकिंग में भी वो आयुष बडोनी के साथ लगातार बात कर रहे थे. कॉन्स्टेंटली हैविंग अ वर्ड विद आयुष बडोनी, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरीके से सारी चीजें हैं.
5 मिनट उन्होंने नॉकिंग में भी, अगर आप देखोगे 5 मिनट उन्होंने जो है वो फुल लेंथ वाली डिलीवरीज मांगी, और उसके बाद और बहुत पुरानी गेंदों से बैटिंग कर रहे थे, बहुत ज्यादा, मतलब एक होता है न्यू बॉल, एक होता है फिर सेमी न्यू बॉल, एक होता है ओल्ड बॉल। ओल्ड से भी ज्यादा गई गुजरी बॉल थी वो मेरे को समझ में नहीं आया कि क्यों इतनी ज्यादा पुरानी गेंद से उन्होंने, हालांकि बैटिंग करते हुए उन्होंने हर तरह की गेंद से प्रैक्टिस करी, दो बॉलर्स जो दो फास्ट बॉलर्स थे वो नया बॉल, बट पहले 5 मिनट अगर आप देखोगे थोड़ा सा फुल लेंथ डिलीवरीज पे नॉकिंग करी, और बाद के 10 मिनट में थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरीज पे नॉकिंग करी। उसके बाद जाते हैं स्पिनर्स को खेलने के लिए, 3 स्पिनर्स को खेलते हैं, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर, सॉरी 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर, एक राइट आर्म ऑफी। तो ये चीजें थी, और उसमें जैसे मैंने जो त्यागी लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, हाइट भी उनका काफी अच्छा है, और उनका बॉल पड़कर जिस तरीके से आ रहा था, एक दो बार तो उन्होंने बीट किया ही, लेकिन मल्टीपल टाइम्स ऐसा हुआ कि आपने उनको देखा कि विराट के बैट के स्टिकर पे मार रहे हैं, हल्का बैट पैड हो रहा है, और शरणदीप सिंह वहां पर खड़े हो रखे थे, तो वो काफी ज्यादा बोल रहे थे वेल बोल्ड, या जो भी वो फील कर रहे थे, मतलब इस पूरे के पूरे कंपटीशन में वो काफी ज्यादा बता रहे थे उन सारी चीजों को। तो आई थिंक वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और इसके बाद आपने 5 फास्ट बॉलर को खेला, जिसमें सिद्धांत एक लेफ्ट आर्म पेसर थे, जिन्होंने एक फुल थ्रॉटल ड्राइव पे विराट कोहली को आउट एंड आउट बीट किया। जिस तरह के एजेस विराट कोहली के लग रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, उस तरह के बॉल पे बीट किया। बट ये 2-3 चीजें हुई। इसके अलावा विराट ने आज गेंदों को छोड़ने में काफी ज्यादा ध्यान दिया, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरीज को जिस तरीके से छोड़ रहे थे। अभी जो संजय बांगर के साथ जो अकेडमी में उन्होंने वक्त बिताया है, उसका थोड़ा सा असर यहाँ पर देखने को मिल रहा था। सो ये चीजें थी जो ओवरऑल 50 मिनट के, मतलब आधा घंटा उन्होंने स्पिनर्स को खेला, 25 मिनट के करीब उन्होंने जो है वो फास्ट बॉलर्स को खेला। 5-5 फास्ट बॉलर्स को खेल रहे थे, अलग अलग वैरायटी खेल रहे थे, फुल ओल्ड बॉल न्यू बॉल हर तरह से प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब बैटिंग छोड़ कर गए तो ऐसा लगा कि कुछ, मतलब ऐसा अधूरा सा छूट गया है। मतलब बहुत टाइम भी नहीं हुआ था, 5-5 बॉलर भी आपको बॉलिंग करा रहे हैं, नवदीप सैनी ने लेंथ बॉल पे बीट किया, वो सारी चीजें एक तरफ हो रही थी, लेकिन एकदम से ही ऐसा लगा कि निकल कर चले गए। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट बहुत सारे उनके बचपन के दोस्त भी यहाँ पर, बचपन क्या, अंडर 15 अंडर 17 डेज के जो दोस्त थे वो भी यहाँ पर आ रखे थे। उनके एक बेटे, मैंने तस्वीर भी वो शेयर करी थी उनकी, कि वो यहाँ पर आ रखे थे और उन्होंने भी उनसे मुलाकात करी। सो आप देखोगे कि ओवरऑल बैटिंग वाइज यस, इट्स अ गुड डे फॉर हिम, लेकिन कुछ कुछ ऐसा लगा कि थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया बैटिंग प्रैक्टिस में। उसके बाद फिर ऐसा नहीं है कि उनको कहीं जाना होगा, उसके बाद उन्होंने आधा घंटा, ऑलमोस्ट 20-25 मिनट कैचिंग प्रैक्टिस करी है, सेकंड स्लिप में खड़े रहे, कैचिंग प्रैक्टिस करी, लोगों से मिले। अभी 5 मिनट पहले विराट कोहली जो है वो ड्रेसिंग रूम के अंदर गए, और मेरे ख्याल से शायद अब तक निकल भी गए होंगे, डोंट नो कि वो निकले हैं या नहीं, बट अभी 5 मिनट पहले वो जो है ग्राउंड छोड़कर जो है वो ड्रेसिंग रूम की तरफ गए, ऑब्वियसली जो उन्हीं के नाम से है, विराट कोहली पवेलियन। तो ये है गार्गी। रोहित यस। रोहित आपसे आपसे मेरा मेरा एक सवाल है। ऑस्ट्रेलिया ने हम देखा विराट को बहुत ज्यादा टिंकरिंग करते हुए उनकी टेक्निक और अप्रोच के साथ, वो क्रीज के बाहर खड़े रहे, उसके बाद बैक फुट पॉपिंग क्रीज को कट करते हुए खड़े रहे, थोड़ा ओपन स्टांस लिया। लास्ट इनिंग्स में एकदम सिडनी में लास्ट इनिंग्स जो खेला, पूरा साइड ऑन चला गया और नेगेटेड, कंप्लीटली नेगेटेड हिज कवर ड्राइव, बिकॉज आप एकदम साइड ऑन चले जाते हो तो आप कवर ड्राइव नहीं कर सकते हो। तो आज का जो नेट सेशंस में, तो वो थोड़ा अप्रोच या उसका टेक्निकल एडजस्टमेंट के बारे में आप बताएंगे? तो आप तो देखे हैं, और स्पेसिफिकली जैसे हमने देखा संजय बांगर के साथ बैक ऑफ अ लेंथ डिलीवरी के ऊपर फोकस कर रहे थे, ऐसा खास कुछ किया है तो आप थोड़ा हमको बताइए। अब एक चीज जो मुझे आज खास तौर पर देखने को लगी, खड़े होने के अंदाज में कोई बदलाव नहीं था बहुत ज्यादा, वो टिपिकल विराट कोहली स्टाइल था। लेकिन जो होता है ना, और दूसरी चीज जहां तक बात है पॉपिंग क्रीज वाली, आई थिंक पॉपिंग क्रीज अगर आपको याद हो, पर्थ टेस्ट में पहली इनिंग्स में आगे खड़े हो रखे थे थोड़ा ज्यादा, वो सडन राइज ऑफ अ डिलीवरी आया, सेकंड इनिंग्स में पीछे खड़े हुए 100 रन बनाया उन्होंने पूरी तरीके से। उसके बाद वो क्रीज वाला मसला कभी भी देखने को नहीं मिला ऑस्ट्रेलिया में। यस, जो आप कह रहे हो साइड ऑन स्टांस को लेकर के चीजें बदलती रही, ब्रिस्बेन में आपने देखा, फिर आपने सिडनी में देखा कि वो स्टांस को लेकर के बदलाव सामने आते रहे। यहां पर अगर आप देखोगे आज जो एक बात उनको कही, शरणदीप सिंह ने एक बात कही कि जो लेफ्ट आर्म सीमर्स है उनके लिए थोड़ा सा लेगिश या मिडिल स्टंपिश गार्ड ले सकता है, थोड़ा सा जो बाहर निकलता हुआ बॉल है, जो एंगल के साथ जो बाहर जाएगा बॉल, उसके लिए थोड़ा सा और ऑफ साइड की तरफ आकर खड़ा हो सकता है, क्योंकि वो नेचुरली एंगल बना के बाहर को निकलेगा बॉल। तो टेक्निकल एडजस्टमेंट सामने से आ रहे थे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आज जैसे अमूमन तौर पर आपने देखा होगा, जो
एडिलेड टेस्ट में उन्होंने बॉल को एक दुविधा में छोड़ूं मारूं, उस पे एक एज लेके चली गई थी उनकी बॉल। तो वो चीज आज तक भी उनके साथ है कि थोड़ा सा बैट को पीछे ले जाकर फिर खुद भी देख रहे थे। वो भी शरणदीप सिंह ने उनको बोला कि ये जो तू बॉल को फॉलो कर रहा है ना, इसको इसको इससे बच सकता है। इस तो सडनली आपने फिर लेफ्ट, और ये स्पेसिफिकली अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, तो वो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स जब उनको गेंदबाजी कर रहे थे तो फिर आपने देखा कि वो बहुत स्टडी है। और जो गार्ड का चेंज था, वो गार्ड का एडजस्टमेंट भी उन्होंने किया कि अगर मैं मिडिल और लेगिश में थोड़ा सा आ सकता हूं तो मैं वो करते हुए दिखाई दूंगा। दूसरी जो एक चीज रही कि काफी ज्यादा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल्स इनको छोड़ना, स्पिनर्स के अगेंस्ट कट शॉट्स पे बहुत ज्यादा जाना, फॉलिंग जिसे आप कहते हो, थोड़ा सा फॉल करते हुए और थोड़ा सा डीप इनटू क्रीज जाकर कट मारना, ये आज विराट कोहली की बैटिंग का थोड़ा सा एक मतलब एक पॉइंट्स थे जिसको आप ये बोलोगे कि हाँ हाईलाइट आप कर सकते हो कि वेरी मच लुकिंग फॉर दैट शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल्स, और उस तरीके से उन्होंने देखा। तो आई थिंक जो 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 फोकस था वो आज यही था कि बैकफुट पर क्या मैं उस तरीके से रन्स बटोर सकता हूं, या फिर कट शॉट्स हो गए, यू नो बिहाइंड द स्क्वायर्स, बेसिकली बिहाइंड द स्क्वायर में क्या छोड़ सकता हूं और क्या मार सकता हूं। मुझे याद आता है आज उन्होंने पूरे 1 घंटे के सेशन में 2 या 3 बॉल ड्राइव के लिए खेली होंगी, जिसमें से एक में वो बहुत बहुत ज्यादा बुरी तरीके से बीट हो गए, जो सिद्धांत का बॉल था, लेफ्ट आर्म सीमर का जो बॉल था, और वो पढ़कर जिस तरीके से निकला है। सैनी, ऑब्वियसली सैनी हमें पता है ऑस्ट्रेलिया में भी वहां पर थे तो उनका भी बॉल आ रहा था, लेकिन सैनी के बॉल पे भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं डिफेंड करते हुए शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल पे वो बीट बीट हुए हैं कई बार। लेकिन वो जो डाउन द लेग साइड मारते हैं, फ्लिक्स जो मारते हैं, या स्क्वायर ऑफ द विकेट जो मारते हैं, वो सारे शॉट्स उनके थे ऑलरेडी। तो टेक्निकल एडजस्टमेंट इतने ही थे। अब आपको ये देखना है कि वो जो मैच सिचुएशन आएगी वहां पर क्या करते हैं, बिकॉज कोहली प्रैक्टिस में ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत अच्छे लग रहे थे, ऐसा नहीं था कि वहां पे बहुत वल्नरेबल लग रहे थे, लेकिन मैच में आपको सडनली लगता था यार ये कोई और ही विराट कोहली को आप देख रहे हो। तो यहाँ पर भी वही है, अगेन लुक्ड गुड। एक आध एज लगना वो स्वाभाविक है 1 घंटे की बैटिंग में, मैं ये नहीं कहूंगा वो बहुत खराब बैटिंग सेशन रहा या ये हुआ या वो हुआ। एक स्पिनर पे उनका एज जरूर लगा, त्यागी पे, जिसको अगेन वो लॉफ्ट करना चाह रहे थे, उस पे एज जरूर आया, और एक आध स्टिकर पे भी बॉल लगा, एक आध बैट पैट भी हुआ, बट वो होता है, वो सारी चीजें होती हैं। बट ओवरऑल अगर मैं कहूं तो यस, इट्स अ रियली गुड सेशन फॉर विराट कोहली। बस यही लगा कि थोड़ा इनकम्प्लीट तरीके से उन्होंने बैटिंग को छोड़ा। मुझे ऐसा लगा कि बहुत, वो जब गए बैटिंग को छोड़कर, तो ऐसा लगा जैसे यार मतलब अभी तो इतनी सारी चीजें हो रही थी, आप बीट भी हो रहे हो, आपको लेंथ एडजस्ट करने में भी टाइम लग रहा है, आपको गार्ड भी लेना है, आपको एक गार्ड के लिए भी बोला गया है कोच की तरफ से। तो उसमें उन्होंने मुश्किल से 10-15 गेंदें खेली होंगी और फिर वो चले गए। Devashish Naman, what I want to ask you guys is Rohit has given us a comprehensive, detailed breakdown of what happened in that practice session. But going forward into this match, of course, it doesn't really mean much because it's just one game. But when you look at this match, what are you expecting to see out of a Virat Kohli? What will you be looking for? What are the signs you will be looking for here? Devashish? Yeah, obviously one would expect Virat to score runs, means which has been missing in recent times, and that is why the fans will come and go to the Arvind Jaitley Stadium in numbers just to watch Virat bat, and also the fact that he will be donning the Delhi jersey after a gap of 12 years. So that itself is a bonus for the fans who would be going to watch. And as was the case in Mumbai when Rohit Sharma um, played that Ranji Trophy match. So one would hope that Rohit missed. Obviously, he did look to be fluent in the second innings, but unfortunately could not make it big. But as far as Virat is concerned, one would hope that he goes on to make a good score that will do his confidence a world of good. Remember, the Champions Trophy is coming around the corner, so it will augur well for India. Naman, same question to you. What are you looking for when you look at this innings of Virat Kohli or this next game? I mean, the match is inconsequential. To be fair, Virat Kohli is just going to jump into the white ball season after this. There's a 4 day gap between the end of the last Ranji group phase match and the bilateral series, the ODI bilateral series with England that is going to start. So it doesn't matter much. What I'm going to say is this Delhi side, which has been struggling, which has been cut as a sorry figure in domestic format, except this S-Mat, this season's S-Mat.
the young guys in the team will get to learn a lot playing alongside Virat Kohli. They'll try to learn whatever an international player, a superstar like him, uh, goes through, whatever he does in his practice, how he deals with these kind of situations where he has also been struggling, especially in the while batting. So what I would expect is Kohli to dispatch as much information to this Delhi team, give them the information to learn and all of those things. And this is what I mean. I expect him to do. And yeah, Kohli has been. I mean, he's a superstar. This game is not going to uh, give him anything in the sense that he's not going to improve a lot, or he's going to uh, remove all the errors that he had made during the Australian tour. So yes, that's what I'm looking forward to, him gelling up with the young Delhi guys and helping them also improve in some way. Shomik, to move away from this point, to move away from Virat Kohli now and talk about tonight's game. Rajkot will be important. India can possibly seal the series tonight. But when we talk of the playing 11, do you think India will go in with an unchanged 11? I think so, Gagi. See, in Rajkot, you can have only two kinds of surfaces. Either you prepare a highway or you prepare a snake pit. Like the last Ranji Trophy game, Jadeja came up with 12 wickets. It was played on a snake. So Rajkot offers you just two possibilities, either a highway or a snake pit. Now, for a T20 game, they are not going to lay out a snake pit. It will be a highway and it is going to be a high scoring game. From England's perspective, last game, their bowlers bowled well. Uh, England have already named their playing 11. Their batsmen so far has failed to counter India's spin, especially Varun Chakravarti. But India, the way they have taken a psychological, especially with the win in the last game, it was मैं क्या 50-50 करूँगा? going into the last match, last over also. So I don't think, unless there is an injury, you don't know if there is an 11th on niggle or something like that. In practice session, someone is picking up an injury. That is a completely different issue. But I don't think India are going to tinker with their combination, especially this game. I very likely they will go unchanged if they win in Rajkot and wrap up the series. I Rotation is expected, and I would expect Shami to play the last two games. Naman, your thoughts? India going in with an unchanged 11, is that what you would expect as well? Yeah, I mean, they'll probably stick with the winning combination unless Shami is fit enough to play. I mean, they would like to give him the time that he requires before the Champions Trophy begins. So I believe that, like Shamik sir put it forth, that India is going to stick to their playing 11 that they have been doing. England has been struggling with the spin, but this pitch is going to be a very bouncy and pacey pitch where batters have it all to do. It's a batting friendly pitch, and it will be an amazing watch to see how Indian batters, especially the captain Surya Kumar Yadav, who has been in a kind of a slump recently, if he can do well, because he did that. I mean, his last 100, I believe, was against Sri Lanka on the same pitch. So yes, in T20. So I believe they will stick with it, and they will try to do as much. I mean, the batters will try to get as much as they can. Debashish Mohammad Shami, do you see him coming into the team tonight? No, Gargi. And if you ask me, I don't see. I see only one change, and that will be Shivam Dubey coming in place of Dhruv Jurel. That's the only change for me because Shivam Dubey did not turn up in Chennai because he was playing the Ranji Trophy match for Mumbai. That was the reason he could not make it to Chennai. So that will be the only change for me because otherwise there has been contributions from everyone, be it the spinners, be it the batters, except for that if there is any concern, that has to be Captain Surya Kumar Yadav. Obviously, in recent T20 internationals, he has not looked the Surya Kumar Yadav we would have liked to watch, but given the stature, given the batter he is, it's just one knock away from getting back to form. As far as the team combination is concerned, we all know England are going unchanged, so India
I reckon it will be only one change, which Shivam Dubey coming in place of Dhruv Jural. Yeah, absolutely. Thank you, Devashish. Thank you. I mean, thank you for reminding me. It just went out of my mind that Shivam is joining the squad. Because And you are focused, Shomika, you are focused with Virat Kohli. Virat. Exactly. so the thing is that Shivam is coming back, and very likely he would replace Dhruv Jurel, as Devashish said. I mean, thank you so much for reminding me. But let's go. We have a lot of comments here, so I'm going to take a few before we wrap up the show. Professor is saying India is too big a country to hold spots in the team for two players without performance. Well, one of them lost it, and he was the captain of the team. So you also have to think about that. Gaurav 10 is saying, end this superstar culture. We can create bigger superstars than Kohli and Rohit. We have so many young players, they need game time. Kohli and Rohit should retire. Who wants to take this one? You can't decide when someone retires, can you? Absolutely. Shomika, I take mean, it. uh, retirement is a player's call. Whether Yeah. it is Virat Kohli or Rohit Sharma, or whoever it is, irrespective of the stature of the player, retirement is the player's call. Whether to pick him or not is the selector's call. So it is up to Ajit Agarkar and company to decide whether Virat Kohli and Rohit Sharma have any red ball future. Right? It is for, and they are being handsomely paid to do their job. Uh, um, from my experience as a cricket correspondent, what I can say, and this is completely my personal observation, that I don't see Rohit Sharma getting a second win in Test cricket, because even in the Ranji Trophy game he played against Jammu Kashmir fast bowlers, he looked a bit hurried. That reflects what. That reflects what. Virat is younger and fitter, and mind, absolutely, there is no. We are not comparing Rohit Sharma and Virat Kohli here. But Virat, by in his own right, is one of the all-time greats. He is a better batsman than Rohit Sharma across formats. He is one of the all-time greats, and he is a far better Test batsman. And also, even going through a follow period, we have to keep in mind that he scored a century in part. So maybe Virat Kohli still have something to offer as far as Test cricket is concerned. There are some chinks in his armory, some technical issues, which was not addressed properly in Australia. I don't know. I mean, the communication with the coaching staff was not spot on, apparently. That's why he turned to Sanjay Bangar, an ally he trusts. He turned to Sanjay Bangar up after returning home. And Virat Kohli, like every great sports person, he is a very proud individual. He would like to see that he is living on his own terms. So if there is a second win for Virat Kohli, I will not be surprised. So Virat Kohli, and we have to take into account of the fact that over the past 5 years, Virat Kohli's form has dipped. And against New Zealand and also against Australia, we saw some technical issues. Definitely, he will try to iron out his flaws. The technical issues we can pick from outside. Virat Kohli knows it far better. So he will try to iron out his flaws. And let's see how things pan out. I see him in the Indian squad for the five test series in England. More questions. Why Pant is not playing second round of Ranji? He could have managed it. Is he busy with international duties? Is that why he's not playing? Which I think is the case, No, right? no. Most of the players have decided to stay away from this round of Ranji Trophy is because to focus on one-day cricket, which with the Makes sense. upcoming three-match one-day series. That's the reason Shubman Gill is not playing for Punjab against Bengal, which will get underway at Eden Gardens from June 30th, January 30th. Sorry. Rohit is also not playing. Yashasvi is also not playing. So the idea is means obviously the guys who were not part of that first round or 23rd match is playing. Likewise, Mohammad Siraj will be seen in action for Hyderabad. K. Rahul for Karnataka, Virat Kohli, we all know.
will play for. So that is the only logic behind, because the focus now shifts to the one day format, because that was the players after returning from Australia, they needed a break. So but still they went on to play that game, Ranji game, that January 23rd game. So I think that might be the reason that Pant is not playing, and he would, so obviously there must be some message from the team management, so as to prepare the white ball players for the one day series coming up against England. Yeah. Fit Monk is asking, why is Bumrah's fitness so top secret? Grow up BCCI. Well, we don't know why it's a top secret. That's something we're also wondering. But Naman, on this whole debacle of no one knowing what is going on with Jasprit Bumrah, what do you think? What are your thoughts as a journalist, as a cricket fan? I mean, you have to provide clarity at some point. You need to tell us, I mean, not tell us, but you need to put it forth. Is Bumrah fit enough to play even the ODI bilateral series that is coming up? I mean, he's out. I understand Harshit Rana is going to play instead of him, but if he's not fit enough to play the ODI series, is he good enough to directly jump into the Champions Trophy? I mean, do you have another backup? Shami is already not playing enough matches. He's getting a delayed start already. How are you going to depend on two bowlers whose fitness is right now under scrutiny? I mean, they both are not. There's no clarity. So BCCI has to tell: is there something going on with Bumrah? Is his fitness not at the best? Is he going to come in Champions Trophy a bit later? Is he going to start immediately for Champions Trophy? And how much stress that will put on him? There's no prior matches he's going to play then. I mean, BCCI has to give some clarity here. Even, I mean, to the management, to Gautam Gambhir and team. I don't know if they have told them at this point. No, Gargi, I think the thing BCCI too doesn't have much clarity over the issue at the moment, for for the reason that I don't have much details about Bumrah's injury and the update. But what I know is that the scan reports are coming on either on February 2 or February 3. The BCCI is waiting for that. That much I know. Beyond that, I don't know much. Meanwhile, it was good to see him, Bumrah, at Motera, and Chris Martin singing an ode to him, taking a break from his show. But there were some reports which suggest that Bumrah, after the report in his report, and the BCCI gets the report, they are going to send him to New Zealand. The doctor who operated him, he is going to reassess the reports and take a final call. Means it's such kind of a precautionary thing. So just to see how serious the injury is, and as of now, it doesn't look to be serious, but he will be all ready. But it goes to be seen whether he is available for the 20th game, the first match of the Champions Trophy against Bangladesh. Whether he is going to make it to that available for that match, that will be interesting. Um, Gargi. Yeah, I think we with that one question here. What this team looks pathetic. No X factor and just only three bowlers. Shami is doubtful. Pathetic selection from Rohit. Sky is the captain. So how does Rohit come into the equation? But anyway, And I let's. think I think he might be referring to the one day side. Oh, Monday side. Not sure. Anyway, I think with that, I think we can call it a day for now. We'll come back at 5 at 5. So don't forget to join us then. Boria Mujumdar will also join us. So thank you, Debashish, Shomik, and Naman for joining, and to everyone